Bismillahirrahmanirrahim. Miss Mehwish here, the chemistry lecturer of O-levels and A-levels, and our course code is Chem 5070. In the previous lecture, we have learned all about the physical properties, the general properties of hydrocarbons, consisting of alkanes, alkenes, and alkynes. Today, we will learn all about the chemical properties of alkanes. First of all, what are the different chemical reactions performed by alkanes? We learned that alkanes are saturated in nature. As if they are saturated in nature, they couldn't follow addition reactions because they are already saturated. First of all, the types of reactions performed by alkanes is combustion. In the literature, combustion means to burn in the presence of oxygen. So in chemistry, combustion means the burning of hydrocarbons, alkanes, in the presence of oxygen, atmospheric oxygen, to form two products. First one is carbon dioxide gas, and the second product is water in the form of steam or gas. So combustion reaction is a reaction that takes place in the presence of oxygen. Burning of hydrocarbons takes place in the presence of oxygen to form two products, carbon dioxide gas and water in the form of steam. The most common example is the burning of methane. Methane is a gas that is used as a cooking gas at home in the kitchen, for cooking and various purposes as a source of fuel. So look at the diagram equation, which is the combustion of methane gas CH4 reacts with 2 moles of oxygen, 2 molecules of oxygen and 1 molecule of CH4 methane transform into carbon dioxide and 2 molecules of water in the form of steam. Next one is the reaction of propane or the combustion of propane. When propane follow combustion reaction, just like methane, it also forms the similar product carbon dioxide and water, only the difference is in number of moles. In the case of methane, only 2 moles of oxygen were being consuming, while in the case of propane, 5 molecules of oxygens were consuming. Second type of reactions performed by alkanes is substitution reaction. Substitution means to replace the hydrogen of hydrocarbons. Alkanes undergo substitution reactions with the most important substituents, which are also called group 7 halogens in the periodic table. Halogens are also called salt formers. Halo means salt. Substitution reaction of alkanes takes place in the presence of ultraviolet light. Look at the example. CH4 methane reacts with chlorine and hence transform into chloromethane and hydrogen chloride. One of the hydrogen of the methane has been replaced by chlorine. In the second step, similar repetition takes place. Chloromethane reacts with chlorine to form dichloromethane. Dichloromethane reacts to chlorine and hence transform into trichloromethane in the third step. In the fourth and last step, trichloromethane again reacts with chlorine to form tetrachloromethane. If we look at the example, at the start of the reaction, in the step 1, carbon has 4 hydrogens, while at the end of the reactions, carbon carry 4 chlorines. Clearly shows substitution takes place. Chlorine substitute 4 hydrogen atoms which were combined with carbon in the form of methane gas. A new compound is formed which is called chloroform. As an anesthetizer, it is being used to faint animals and human as well. Next is preparation of alkenes. How alkenes could be prepared on large scale. The most important and common method for the preparation of alkenes is cracking.
Cracking means to crack larger molecules into smaller subunits or smaller molecules. So cracking is breakdown of larger organic molecules into smaller hydrocarbons. Look at the example. An 18 carbon containing hydrocarbons being cracked into two products. First one is octane and the second one is ethene. Cracking is usually takes place in the presence of suitable catalyst and under certain conditions, under certain temperature. Next is, what are the reactions performed by alkanes? Alkenes are unsaturated hydrocarbons as they carry double bond in the carbon to carbon. Combustion. Combustion is again the burning of alkenes in the presence of atmospheric oxygen to transform into two products, carbon dioxide gas and water in the form of steam. Look at the example. C2H4 is ethene. Follow combustion to form carbon dioxide and water. And in the second example, C4H8, butene. Follow combustion and form carbon dioxide and water. There is no change between the combustion of alkanes and combustion of alkenes. Both follow combustion in the presence of atmospheric oxygen and hence form two similar products, carbon dioxide and water. Addition reactions. Alkanes couldn't follow addition reactions as they are saturated in nature. All the four sides of carbon are being occupied by 4 hydrogens. As the valency of carbon is 4, combining capacity of carbon is 4. So all the 4 sides are being occupied by 4 hydrogens. While in the case of alkenes, there are 2 bonds that are termed as double bond from carbon to carbon. So alkenes have capacity to accommodate 2 more atoms. So it will follow addition reactions. Look at the example. Example is C2H4, that is ethene. Ethene reacts with bromine. Bromine is halogen. Br2 is a halogen, group 7 element. Bromine reacts with ethene to form 1,2-dibromoethene. 1,2 is the position of attachment of bromine with ethene. Ethene reacts with bromine to form 1,2-dibromoethane. Always remember one thing. Initially, it was an alkene, ethene, but after reaction with bromine, it transformed into ethane, 1,2-dibromoethane. An alkene is being transformed into alkane. So don't confuse it that 1,2-dibromoethene. No, it's not ethene, it's 1,2-dibromoethane. Bromine water test. It could be asked in 2 ways. How we can differentiate between saturated and unsaturated solutions within the laboratory, number 1. And the second way is, what is bromine water test? First one is the most important. How saturated and unsaturated compounds could be differentiated within the laboratory. The answer is bromine water test. By performing bromine water test, one can easily differentiate between the solution that is saturated or unsaturated. Now, what is the chemistry of bromine water test and what are the observations of bromine water test? Move towards the chemistry. How we can perform it. If we are given with a solution that is any hydrocarbon and we are unaware about which hydrocarbon is it, whether it is saturated or it is unsaturated, just pour few ml of brown liquid bromine within the solution. If the solution is unsaturated, the brown color of the bromine liquid will disappear and a colorless solution will appear within the test tube. This clearly indicates addition reactions takes place and hence your organic compound is, your hydrocarbon is unsaturated.
What will happen? What would be the observations? Decolorization of orange-red color of bromine solution indicates unsaturation. Look at the diagram. The diagram consists of two test tubes. First test tube consists of a brown solution and the second one having a colorless solution. If we add the brown bromine solution into the colorless solution, brown color of the solution, bromine, will disappear. Disappearance of brown color of bromine clearly indicates the unsaturation. Clearly shows that unsaturation is present in the solution. Our solution is unsaturated. If color changes couldn't happen, clearly shows the solution is saturated. Catalytic hydrogenation. Catalytic means in the presence of catalyst. Hydrogenation. Hydro means hydrogen. Genate means addition. So catalytic hydrogenation is the addition of hydrogen in the presence of suitable catalyst, that would be nickel or palladium, at 180 degrees C is called catalytic hydrogenation. Addition of hydrogen in the presence of catalyst at suitable temperature is called catalytic hydrogenation. Look at the equation. C2H4 is ethene and two atoms of hydrogens are being added into the ethene to transform into ethane. As hydrogen is being added up, so this is an addition reaction, that is catalytic hydrogenation. Now, the most important point. What is the industrial application of catalytic hydrogenation? How it is helpful in our daily life? Catalytic hydrogenation is important for the manufacturing of margarine from unsaturated vegetable oil. Margarine is also used as a source of vegetable ghee for various dairy products, etc. etc. Next is hydration of alkenes. Hydration means addition of water, as we usually use a term dehydration, hydration. This food is very big source of hydration for our body in summer season. So hydration of alkenes means addition of water into the alkenes. Alkenes undergo addition reaction with steam. Water couldn't add up in the normal temperature state. It could only be added up within the alkenes at higher temperature using a catalyst, that is phosphoric acid. What will happen? When water will added in the form of steam into the ethene, alcohol will form, that is ethanol. Any compound which have a symphony ol at the end of the name is called alcohol. Ethanol, methanol, propanol, butanol, all these are called alcohols. Look at the equation. C2H4 is ethene. Water is being added up and transformed into ethanol, C2H5OH. Remember one thing. What is OH? OH is the functional group of alcohols, right? Now, the most important point. What is the industrial application of hydration of alkenes? This reaction is used for the manufacture of alcohols, cheap alcohols at industrial scale. Polymerization. Poly, many, mers, blocks, Asian, addition. So polymerization is the formation of larger molecules by the addition of small building blocks. The formation of larger molecules by the chemical bonding of unsaturated small monomer means subunit, is called polymerization. When n number of ethene molecules combine together by form a strong covalent bond, they transform into polythenes. Polythenes. Look at the equation. Small letter n at the start of the equation clearly shows n number of ethene molecules, while in the product side, small n indicates n number of ethene molecules are present in this polymer.
Industrial applications. Polymerization reaction is used to make plastic and man-made fibers. It is also used to make large number of monomer molecules by the breakdown of polymer and so on. Next is, what are the types of reactions performed by alkynes? So as this is not in our curriculum of O-levels, so we will not discuss all about it. Let's skip this section quietly. All in all, हमने आज क्या पढ़ा? एल्केन्स के कौन से रिएक्शंस होते हैं? सबसे पहले कंबस्टन रिएक्शन है. कंबस्टन का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलना. हाइड्रोकार्बन्स का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपने आप को जला के दो प्रोडक्ट्स में चेंज होना, और वो दोनों प्रोडक्ट गैसेज होंगी. एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और दूसरी वाटर है. वाटर वुड बी इन द फॉर्म ऑफ स्टीम. उसके बाद हमने पढ़ा और कौन से रिएक्शंस हैं जो एल्केन्स परफॉर्म कर सकता है. एक बात हमेशा याद रखें, एल्केन्स ऑलरेडी सैचुरेटेड है, उसके पास किसी और को एक्यूमुलेट करने की, एडअप करने की जगह नहीं है. कार्बन की वैलेंसी +4 होती है. कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं. सो किसी पांचवें मेंबर के आने की तो जगह है ही नहीं कार्बन के पास एल्केन्स के केस में. इसीलिए एल्केन्स एडिशन रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी दूसरे बंदे को हटाकर उसकी जगह पर चले जाना. जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम कॉलेजेस में क्या होता है, कोई एक टीचर एब्सेंट है तो उसकी जगह पे कोई दूसरा टीचर चला जाता है, उसकी सब्स्टिट्यूशन अटेंड कर लेता है, सो दैट बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो. सेम इज़ द केस विद केमिकल्स, सेम इज़ द केस विद केमिस्ट्री. मीथेन मॉलिक्यूल है, अगर वो हेलोजेंस के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ग्रुप 7 एलिमेंट्स हेलोजेंस. हेलोजेंस को हेलोजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सॉल्ट फॉर्मर्स होते हैं. ये मोस्टली सीज और ओशंस की डेप्थ में होते हैं. ठीक है, समुद्रों की गहराई में होते हैं ये सॉल्ट्स. मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म्ड बाय मीथेन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हेलोजिनेशन. क्लोरीन ऐड हो रहा है तो इसको हम हेलोजिनेशन का टाइटल भी दे सकते हैं. एट द एंड CCl4 बना कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन क्लोरोफॉर्म. स्टेप वाइज अगर हम रिएक्शन को देखें तो स्टेप वाइज नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कम हो रही हैं, नंबर ऑफ क्लोरीन्स ऐड हो रही हैं, क्योंकि क्लोरीन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन्स को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, उनकी जगह ले रहा है. हम अल्कीन्स को लार्ज स्केल पे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? क्रैकिंग का मतलब होता है क्रूड प्रोडक्ट्स को, क्रूड रिएक्टेंट्स को ब्रेक डाउन करना इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर. C18 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन एल्केन जब हम हीट करेंगे तो वो 2 नए प्रोडक्ट्स में चेंज होगा. एक है ऑक्टेन और दूसरा इथीन. ठीक है, समहाउ बॉयज़ को तो ज़्यादा बेटर पता होगा, अक्सर लिखा होता है हाई ऑक्टेन फ्यूल. हाई ऑक्टेन का मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा प्योरीफाइड है. ठीक है, सो ऑक्टेन इज़ ऑल्सो अ प्रोडक्ट जिसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं. और इथीन गैस है, इथीन गैस को भी डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं. उसके बाद हमने पढ़ा एल्कीन्स अगर कंबस्टन करती हैं तो क्या करती हैं, कैसे करती हैं कंबस्टन मैंने पहले भी बताया. जैसे हाइड्रोकार्बन्स बर्न करते हैं ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है. मीथेन की एग्जांपल पढ़ी. मीथेन की एग्जांपल में हमने क्या पढ़ा था, मीथेन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबस्टन शो करती है तो 2 प्रोडक्ट्स बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर गैस. सेम इज़ द केस विद एल्कीन्स. देन हमने पढ़ा एल्कीन का एक नया करेक्टर, दैट वाज एडिशन रिएक्शन. अल्केन्स एडिशन नहीं कर सकते, अल्कीन्स एडिशन कर सकते हैं क्योंकि एल्कीन्स में कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है, 2 और नए आने वाले एटम्स को एक्यूमुलेट करने की पावर होती है इनमें. सो एग्जांपल में ऑलरेडी मेंशन कर दिया हमने. उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने वाली है कैम्ब्रिज पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रोमीन वाटर टेस्ट है. ऑलमोस्ट हर 1 या 2 साल के बाद ये आता है पेपर में. मई जून के पेपर में आता है, अक्टूबर नवंबर में आता है. अगर मई जून में नहीं आया तो अक्टूबर नवंबर में आएगा, अक्टूबर नवंबर के पेपर्स में नहीं आया तो मई जून में आएगा, सो फोर्थ. ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्यों यूज़ करते हैं? ये चेक करने के लिए कि आपका गिवन कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है. अब हमें पता है ओ लेवल्स में ATP का पेपर तो होता नहीं है, सारा आपने एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व करना है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि वो सब A लेवल्स में है. इसलिए हम इस क्वेश्चन को लर्न भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे. आपने कैसे लर्न करना है इसको कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट की केमिस्ट्री क्या है. अगर हम ब्राउन ब्रोमीन सोल्यूशन को
अपने गिवन सोल्यूशन में एडअप करेंगे। अगर तो ब्राउन कलर डिसअपियर हो गया तो आपने कहना है कि हमारा सोल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड। अगर डिसअपियर ना हुआ तो आपने कहना है कि हमारा सोल्यूशन सैचुरेटेड है। सो दीज आर द ऑब्जर्वेशंस। हमेशा याद रखें जब भी ऑब्जर्वेशंस पूछी गई हैं तो आपने ऑब्जर्वेशंस लिखनी है, टेस्ट नहीं लिखना। टेस्ट पूछा है तो टेस्ट लिखने हैं, ऑब्जर्वेशन या रिजल्ट्स पूछा तो ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट्स लिखने हैं। इसमें दोनों में कन्फ्यूजन नहीं करनी क्योंकि मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा एल्कीन्स के रिएक्शन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोजन का एडिशन है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी हमने देखी। देन हाइड्रेशन, हाइड्रा मतलब पानी, एडिशन ऑफ वाटर। अगर हम एल्कीन्स में वाटर ऐड करें तो वो अल्कोहल में चेंज हो जाती है। अल्कोहल मतलब जिसको कॉमन लैंग्वेज में शराब भी बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि हम एल्कीन्स को यूज़ करके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बना के पॉलीमर्स में कैसे चेंज कर सकते हैं। छोटे छोटे मोनोमर को कंबाइन करके बड़े मॉलिक्यूल्स बनाना, पॉलीमर बनाना। जैसे ओ लेवल 1 है या ओ लेवल 2 है। छोटे छोटे पॉलीमर क्या है, आप सब लोग हैं और आप सबको मिला के एक नई चीज़ बनी है पॉलीमर। पॉलीमर कौन है, ओ लेवल्स। आप सब ओ लेवल्स के मोनोमर हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हमने देख ली। देन अल्काइंस के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, हमने अल्काइंस को डिस्कस नहीं करना क्योंकि ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। अल्काइंस के रिएक्शंस, केमिस्ट्री, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सब कुछ हम ए लेवल्स में डिस्कस करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ एवरी स्लाइड शो इज कैम्ब्रिज क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1, if chlorine reacts with propane, a substitution reaction takes place. What other products could be formed? आपने नंबर 1 में क्या बताना, कौन से और प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, क्लोरीन की पोजीशन को चेंज कर दें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इथीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, मतलब स्ट्रक्चर फॉर्मूला। मोलेकुलर फॉर्मूला पूछे तो मोलेकुलर फॉर्मूला बताना है, जनरल फार्मूला पूछे तो जनरल फार्मूला बताना है, स्ट्रक्चर फार्मूला पूछे तो आपने स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। तीनों चीज़ों को याद रखना है, जनरल, मोलेकुलर, स्ट्रक्चर, ठीक है। कैम्ब्रिज में ये सारी चीज़ें बहुत काउंट होती हैं। हाउ ब्रोमीन वाटर इज़ यूज टू डिटेक्ट वेदर द गिवन कंपाउंड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया, आपने केमिस्ट्री और ऑब्जर्वेशंस बतानी है। विच वुड बर्न विद द सूटीएस्ट फ्लेम, इथेन और इथीन। सूटी फ्लेम किसका होता है, अब सूटी फ्लेम का मतलब तो पता होना चाहिए ना आपको, इथेन या इथीन। अगर हम इथेन को जलाते हैं तो ज़्यादा सूटी फ्लेम बनेगा या इथीन को जलाते हैं तो ज़्यादा सूटी फ्लेम बनेगा। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस डू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो। अनसैचुरेटेड में कौन कौन से हो सकते हैं, एडिशन हो सकते हैं, ठीक है, ये सारे आपने बताने हैं। व्हाट डू एल्केन्स एंड एल्कीन्स हैव इन कॉमन, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। जिसने पूरा लेक्चर थॉरोली सुना होगा, देखा होगा, गो थ्रू किया होगा, ऑब्वियसली वो इन सारे 5 के 5 क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकता है। मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस को ऐड करूं सो दैट आपकी कैम्ब्रिज की प्रिपरेशन भी साथ साथ होती जाए। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू। In the end, gracias everyone and stay tuned with me. In the end, in the most crucial time, I must say that please stay home, stay safe, keep each other safe so that no one could be harmed by you, by your negligence. So stay tuned and subscribe my channel, share the videos, and obviously press the bell icons to all so that you may get the updates of my videos. I will obviously upload for all of you. Well, thank you for your positive feedback, for your likes, views, and shares. Allah Hafiz.